Good morning to all of you. Welcome to all the audience in house stay. I'm Nikhil Kumar. I'm here with the topic need and need of professional growth. First of all, we understand what is the professional growth. Professional growth means a process to identify the goals and learning new skills to help you grow and succeed at your work. प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने गोल्स को, अपने लर्निंग्स को और अपने नए नए स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि हमें हमारे वर्क में सफलता के लिए कंट्रीब्यूट करता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लीड टू ए प्रमोशन और चेंज इन द जॉब और सिंपल टू डूइंग बेटर इन द करंट पोजीशन। Professional development is a type of way that we can achieve your success in our career. It doesn't matter what your profession, but in every profession it is compulsory and all workers have a desire to be success in their career. चाहे हम टीचिंग के जॉब में हो या फिर सर्विस के जॉब में हो, डिफेंस के जॉब में हो, पॉलिटिक्स के जॉब में हो, किसी भी जॉब में क्यों ना हो, हम अपने कैरियर को, अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, अपने नॉलेज को एक्वायर करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपने गोल के प्रति एक स्ट्रेटजी सेट करते हैं। जैसे कि जानते हैं कि कहा जाता है कि परिवर्तन के अलावा दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। परिवर्तन के अलावा दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। परिवर्तन संसार का नियम होता है और बिना परिवर्तन का विकास संभव नहीं है। फिर भी सभी लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं। All persons oppose the change, but all are known about that. Without chance, development is impossible. To express this line, I am going to share a story. These stories are belong to LG companies. हम जानते हैं कि भारत की LG कंपनी बहुत बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन आज वो बंद हो गई। उसका फेलियर होने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि वो समय के हिसाब से अपडेट नहीं किया। 2013 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी बनाने वाली कंपनी थी LG। अभी भारत पूरे वर्ल्ड में एप्पल की कंपनी सबसे टॉप चल रही है। उसका मेन कुछ रीजन है, क्योंकि उसका जो बैक होता है फोन का वो स्टेनलेस स्टील का होता है, जबकि आज से बहुत साल पहले 2003 के समय में LG ने अपने बैक कवर को स्टेनलेस स्टील से बनाया था। फिर भी वो फेल हो गए। बहुत सारे फीचर्स जब कोई कंपनी ने लॉन्च नहीं किया था, तब उन्होंने बहुत सारे फीचर्स को लॉन्च किए थे। परिवर्तन
विकास की जननी होती है। एक मोबाइल बनाने वाली जितनी भी कंपनी, सबसे पहले मोबाइल मोटोरोला ने बनाया था। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी मोटोरोला था। फिर भी आज मोटोरोला का क्रेज खत्म हो चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट कंपनी who developed the mobiles in this world, और उस टाइम में एसआर करके सेट हुआ था। भारत में मुख्य रूप से नोकिया, एलजी और सैमसंग का मार्केट में बहुत दबदबा था, बहुत सारे इसके सेल्स थे। लेकिन कुछ समय के बाद इनका क्रेज कम होता गया, क्योंकि घड़ी की सुई भी अपने आप को हर दिन रीसेट करती है। जबकि मोबाइल कंपनी एलजी ने अपने समय के अनुसार अपडेशन नहीं किया, और इस मोबाइल कंपनी में के मार्केट में बहुत सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करने लगी, और उस एलजी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और उस चैलेंज को देखते हुए एलजी कंपनी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, रीसेट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें मोबाइल कंपनी को बंद करना पड़ा। तो ये भी एक परिवर्तन का ही नियम होता है, एक सेल्स का ही नियम होता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ चेंज ही परमानेंट होते हैं, अस्थायी कुछ नहीं होता, सिर्फ परिवर्तन ही अस्थायी होते हैं। जब कोई इंसान सीखना छोड़ देता है तो उसी समय पुराना और ओल्ड हो जाता है। आज से 20-30 साल पहले की शिक्षा पॉलिसी की बात करें, शिक्षा नीति की बात करें, तो आज जो एजुकेशन पैटर्न है, जो सिस्टम है, वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है। ये चेंजेस हैं, और पहले के जो टीचर थे, आज से 20 साल पहले जो टीचर थे, अगर उन्होंने अपना अपडेशन छोड़ दिया या फिर अपने आप को सीखना छोड़ दिया, तो आज के जमाने में आउटडेटेड हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। तो सीखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। अगर अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशनल में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो अपने आप को, अपने गोल्स को, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये भी एक परिवर्तन का उदाहरण है। जब हम अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को चाहते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ सिर्फ चाहने से नहीं हो सकती है। अगर चाहने से सब कुछ होता तो हम बहुत कुछ कर लेते। एक कहावत है कि अगर चाह का घोड़ा होता, आई मीन विशेष हॉर्स, अगर चाह का घोड़ा होता तो घोड़े भी भिखारी पे घूमता, भिखारी भी घोड़े पे घूमता। अगर चाह का घोड़ा होता तो भिखारी भी घोड़े पे घूमता। सिर्फ डिजायर रखने से आपकी काम नहीं होता है। आप डिजायर रखते हैं तो डिजायर के साथ साथ उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। इन मेनी कंट्रीज द रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल्स आर चेंजिंग, एंड सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टू टीचर्स? Teachers are asked to the teachers in the increasingly multicultural classroom to place greater emphasis on integrating students with a special learning needs and their classrooms to make more effective use of information and communication technology for teaching, to engage more in planning within the
evaluate, and accountability framework, and do more to involve parents in schools. No matter how good pre-service training for teacher is, it cannot be expected to prepare the teachers for all the challenges they will face throughout their career. Education system therefore seek to provide teachers with the opportunities in a service professional development in order to maintain the high standard of teaching and to retain the high quality teachers workforce. Effective professional development ongoing, including training, practice and feedback, and provides the adequate time to follow the support. Effective प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग जरूरी होता है, प्रैक्टिसिंग जरूरी होता है और फीडबैक जरूरी होता है। हम लोग यहाँ पे इन हाउस ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये इन हाउस ट्रेनिंग हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको इफेक्टिव प्रोफेशनल ग्रोथ करना है, उसमें ट्रेनिंग भी आपके ग्रोथ का एक हिस्सा होता है। प्रोफेशनल ग्रोथ को करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, रास्ते होते हैं, और रास्ते नहीं, ये हमारी जरूरत भी होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अपने प्रोफेशन को, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ वेज यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर नहीं करेंगे तो भी आप अपने करियर असफल रहेंगे, क्योंकि हमारे ये वेज ही नहीं है, ये हमारे रिक्वायरमेंट भी है। और इसके बिना हम आगे डेवलप नहीं कर सकते। सक्सेसफुल प्रोग्राम्स इन्वॉल्व्स द टीचर्स इन लर्निंग एक्टिविटीज दैट आर सिमिलर टू ones they will use their students encourage and development of teachers, learning communities. There is growing interest in the development schools as a learning organization, and in the ways for the teachers to share their expertise and experience more systematically. अगर एक सफल प्रोग्राम के लिए हमें बहुत सारे लर्निंग एक्टिविटीज को इंक्लूड करना पड़ता है, इसमें अपने टीचर्स अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और अपने एक्सपीरियंस को एक सिस्टमैटिकली, एक सिस्टम के द्वारा एक सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। The development of teachers beyond their initial training can be serve a number of objectives, including to update the individual's knowledge of a subject in the light of recent advance in the area। अगर आप अपने आप को इंडिविजुअल अपडेट करना ही एक प्रोफेशनल ग्रोथ का भी एक हिस्सा होता है। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं अपने कैरियर में कि मैं अपने आप को कैसे चेंज करूं, यहां सिस्टम ही ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को इंडिविजुअल ग्रोथ करके भी, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ करना है तो उस ग्रोथ में इंडिविजुअल अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू अपडेट द इंडिविजुअल स्किल्स, अपने स्किल्स को भी डेवलप करना भी जरूरी होता है। और ये जरूरी है कि हम सबके स्किल डेवलप कर लेंगे। हर लोग
हर टीचर्स अपने स्किल्स को इंडिविजुअल अपने आप अपने ही लिए अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। एटीट्यूड्स and approach the life of development of a new teaching techniques and objectives, new circumstances and new educational research to enable the individual to apply the change made to curricula or other aspect for teaching practices, to enable schools to develop and apply a new strategy concerning the curriculum and other aspects of teaching practice, to exchange information and expertise among the teachers and other academic and industrialists, and to help the weaker teachers become more effective. Suppose that अपने इंफॉर्मेशन को और एक्सपर्टाइज को एक दूसरे टीचर से शेयर करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर एक टीचर अपने एक्सपर्टाइज को अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उनके शेयर करने के बाद जो वीकर टीचर होते हैं वो भी बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द एक्टिविटीज दैट डेवलप एन इंडिविजुअल स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स as a teacher। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो मुख्य रूप से जो फोकस करते हैं वो होता है इंडिविजुअल स्किल्स के लिए, नॉलेज के लिए और एक्सपर्टाइज के लिए। सपोज दैट आई एम वर्किंग हियर एज अ टीचर, स्टार्टिंग 6 months आई एम टीचिंग मैथ्स, and after 6 months I am teaching SST, and again after 6 months I am teaching science। और कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे ना कि आपके अंदर एक्सपर्टाइज है ही नहीं, क्योंकि आपने सब चीजों को टच किया और हमारे सब चीजों को होने से हमारा नॉलेज जो है वो हर फील्ड से आया, लेकिन हम किसी का एक्सपर्टाइज नहीं बन सकते। अगर कोई साइंस पढ़ाता है तो उसे ऐसा नहीं कि उसको मैथ की जानकारी नहीं है, लेकिन वो दोनों पढ़ाने लगेगा तो किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज नहीं होगा, विशेषज्ञ नहीं होगा, जानकार नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज रखने वाला होगा। तो एक्सपर्टाइज होने के लिए अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को और improve करना होगा। The definition recognize the development can be improved in many ways, ranging from the formal to informal. It can be made available through the external expertise in the form of courses, workshop or formal qualification programs, through collaborations between schools or teachers across the schools. Example, observation visits to their schools or teachers network. Within the schools, in the teachers' work, in the last case, development can be provided through the coaching, mentoring, collaborative planning and teaching and sharing the good practices. बहुत से ऐसे टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि हम अपने आइडियाज को, अपने एक्सपर्टाइज को किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो हमसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसका फायदा
आप दोनों को मिलेगा। आप अपने नॉलेज को ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे और साथ ही साथ आपके कलीग में भी बहुत बड़ा इफेक्टिव देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, अपने एक्सपर्टाइज को शेयर करना दोनों इंपॉर्टेंट होता है। Talis asked the teacher about their professional development activities during the 18 months prior to the survey. This period was chosen in order to cover activities over almost 2 schools years in order to give the more representative picture and listen the possible distortions due to unusually busy and lean period of development and ensure manageable period for teachers recall. The Talis asks to learn teachers about the professional development had they participate in the during the 18 months period to the survey. The teachers were first asked to indicate whether or not they had participated in each other following activities. Here are some activities that are very useful and helpful to grow your professions. First is the courses and workshops. जैसे हम लोग टीचिंग जॉब में इन्वॉल्व, तो अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हम एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार। अपने कैरियर को ग्रोथ करने के लिए, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आप सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार को भी कंडक्ट कर सकते हैं। दिस सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस will very helpful to those teachers who is involved in the teaching professional, and it will be help to improve our career skills. एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में और सेमिनार्स में हम अपने एक आइडियाज को, अपने एक्सपर्टाइज को शेयर करते हैं। क्वालिफिकेशन प्रोग्राम, जैसे आप कोई डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन विजिट टू अदर स्कूल। आसानी कभी स्कूल में काम करते हैं एज ए टीचर, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि घूमने से, दूसरे स्कूल में जाने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऑब्जर्वेशन विजिट कर सकते हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल। पार्टिसिपेशन इन द नेटवर्क फॉर द टीचर्स, टीचर्स का एक नेटवर्क बना सकते हैं। इंडिविजुअल और कोलैबोरेटिव रिसर्च, आप चाहें तो टीचर मिलकर किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, या फिर आप खुद इंडिविजुअली आप भी उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड और पर ऑब्जर्वेशंस एंड द कोचिंग, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। रीडिंग प्रोफेशनल लिटरेचर, अब अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए लेक्चर को रीड कर सकते हैं, जैसे जर्नल्स, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, engaging in the informal dialogue with the peers। दो लोगों के बीच जो डिस्कस होते हैं, डिबेट होते हैं, उसको भी आप पार्टिसिपेट करके आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। Parents ask the teacher about their professional development activities, their impact
the support they received for the undertaking them, the extent to which they wanted to more than they had engaged in their the barriers they feel had prevented them from the doing so. And the areas of their work they found most in need of the further development. Therefore, almost all of the results in this chapter are based on the teacher's report. The exceptions is the discussion of induction and monitoring policies in the school, which report the school principals' responses regarding the existence of such policies in their schools and interpreting the results. It is important to bear in mind the self-reporting nature for the survey response. For example, teachers report about the impact of their development activities, reporting their perceptions. They are not part of the independent evaluation of effectiveness of these activities. Nevertheless, teacher perceptions are important and can be expected influence their behavior. Also, teachers' view about their development needs are to be distinguished from the external assessment of these needs. Chapter 5 will examine the relations between the teacher's report of their development needs and policies and practices that are placed to access and increase the teacher's work. This chapter seeks to answer the following three questions. How much does the amount and profile of a teacher professional development vary within and among the countries? Second, how will our teachers' professional developments need being made? Third, how can unsatisfied demands for the professional development be the best at the chapter first examines the teachers, the participations in the professional development and compare the intensity of the participation in the term of number of the days. The focus in this section is on more structured activities such as the attendance at the courses and workshop, conference, seminars, etc. More informal activities such as engagement in the informal discussions to improve the teaching regarding the professional literature, which are sections then look at the extent to which intensity participation in the professional development differ with the characteristics of the lecture of the schools in which they work and should provide some insight into the distribution of development opportunities. It does not seek an exhaustive, it's focused on the characteristics that are the most often of interest policy makers. This the section thus shed light on how the policy choice countries make the term of providing professional development opportunities are reflected in a comparison of participation rates and intensity rates.
The value of professional development can be influenced by the type of development activities that teachers engage in. The chapter therefore goes into profile all type of activities contrasting formal and less formal development activities, and so how teachers combine different forms of professional development. In the light of these participation patterns, the chapter that investigates how well teachers' professional development needs are being met. It's compared the extent of unsatisfied demand within the between countries and identifies the area of teachers' work which teachers regard as those in which they have a greatest development need. It's included by the considering how levels of unsatisfied demand relate to the professional development which teachers have received. Teachers' views of that have to hinder their participation in the professional development is in the examined in the light of their reports of unsatisfied demand and area of greatest need. It revealed across country variation in the level and type of support received by the teachers to participate in the professional development and examines the relation between the support and received and the level participants report in the survey. School level policies and practices for inductions and monitoring of the new teachers have revealed of the extent to which they differ among the countries. These sections look at how these practices coexist with the other professional development activities in school. Finally, the chapter considered how unsatisfied demands and developments needs might be addressed. This is the first involved an analysis of a teacher's report of the factor that prevents them for engaging the more professional development than they did, and then process to examine the types of professional development teachers find the most effective in the meeting their needs. The final section discuss the policy implications arising from the analysis. Note the further analysis of the professional development data from the TALIS is subjected of the separate thematic reports being published by jointly with the European Commission. The levels and intensify of participation in the professional development. These sections analyze the level and intensity of participations in professional development across the lower secondary teachers populations. Overall, level of participations are measured in the terms of a teacher participations, rates and
intensify of participations in the term of average number of teachers days development during the 18 months period prior to the survey. As noted above, levels of participations and intensity of participations reported in this section do not include the less structured development activities, informal dialogue to improve the teaching and reading professional literature. As these are not readily measurable in the term of number of days of activity. Participation rates. The first shows the country level participation rate in the professional development on average across the 23 participating countries. Almost 89% of our teachers report engaging in the some professional development defined as having the taking a part in at least one day development in the 18 months over the survey period. This suggests the engagement in professional development is a feature of a life of their vast majority of teachers in the participating countries. Nevertheless, it is not a trivial that some 11% of lower secondary teachers did not take part in the structured development activities. When the participations rates are compared across the countries, there are some notable differences. In Australia, Austria, Lithuania, Slovenia, participation is virtually universal with less than 5% of lower secondary teachers having participated in no development activities. In Spain, all teachers reported some participations. This contrasts with the situation in Denmark, Iceland, Slovakia, Republic and Turkey, where around one quarter reported no participations during the period. For these four countries, such as the relatively high rates of non-participations must be source of concern. Intensity of participations. While the participants' rates are generally high, intensity of participation may be different among teachers and across the country. The tariff measures the intensity of participations in terms of the number of the days of professional development teachers having taken during the survey period. Among all lower secondary teachers in participating the countries, teachers had 15.3 days of a professional development in the 18 months period to the next of the survey. In other words, an average of just less than 1 day per month. But countries differ significantly. The highest average number were reported by Mexico, 34 days, Korea, 30 days, Bulgaria, 27 days, and lowest by the Ireland, 5.6 days. The Slovak Republic, 7.2, Malta, 7.3, Belgium, 8.0, Australia 8.3. Internationally,
Therefore, there is a six-fold difference between the high and lowest intensity of participation. Are there attributes of between the participations and intensity? A comparison of the level and intensity participations can be shown to indicate the different policies, such as that a school system may give. Example, to spread the opportunity across all the teachers or to concentrate them on a smaller portions of a teacher population, as well as showing the average number of days of professional development for all lower secondary teachers. So the average number of days teachers had to be some professional development during the survey period. Compare the second measures with the portions of teachers who received some the professional development in the previous 18 months, thus providing contrast between the level and the intensity of participations. From this some interesting context become the apparent. 9 out of 23 countries are in the lower right hand quadrant, which represent a combination of high levels of participations and low intensity. Examples: above average participations and below the average number of days of professional development. This may indicate the choice to spread development opportunity across a very large portion of teachers. The clearest example are Australia, Austria, Slovenia, with the virtually all power and all lower secondary teachers receive some professional development, but an average of only around 10 days. In contrast, teachers in Italy reported participations rate somewhat below average of 85%, yet among those who participated, the number of days was a relatively high average of 31. This may be indicate a situation in which the universal participation is foregone in favor of generous provision for those who have the opportunity to participate. There are exceptions, however. 4 countries with highest percentage of teachers who receive the no professional development: Denmark, Iceland, the Slovak Republic, and Turkey, and also those with below the average number of days of professional development. In the countries, participation in the professional development is far from the universal, but also low intensity of those who participate. At the opposite end of the spectrum, Mexico, Korea, Poland, Spain not only have a high participation but also high intensity of participations of professional development. How does participants vary by teachers and school characteristics? The analysis of disparity in take of the professional development within the countries
which can be more closely focused by the examined participations with respect to the characteristics of the teachers and the schools in which they work. The comparisons and discuss here based on the average days of professional development among the teachers with some professional development in the survey period and show and niche of teachers who had no professional development during this period. The teachers and school characteristics chosen for the comparison are those which are generally of most policies interest to participate in the countries. Gender difference. On average, across the participating countries, there are no statistically significantly difference between male and female teachers. 17.5 days of a professional development on average for female teachers compared with the 16.9 days for male teachers. The largest difference in favor of female teachers were in Mexico, followed by Poland and Korea. Through one of the difference is statistically significant. However, male teachers led to a number of countries, the largest difference being reported in the Portugal, Italy, Turkey. Again, this difference is not statistically significant. पार्टिसिपेशन में भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं और ये वेरिएशन जेंडर डिफरेंस भी है। जैसे मैंने भी बताया कि मैक्सिको में जितना दिन अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को डेवलप करने के लिए महिलाओं को दिया जाता है, उससे कम दिन पुरुषों को दिया जाता है। वैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं उनको फॉलो करती है और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो फीमेल के प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा दिन दिए जाते हैं कंपैरिजन टू द मेल। सेकेंडली द एज डिफरेंस। अब ये ग्रोथ जो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो टाइम दिए जाते हैं, एक तो जेंडर बेस्ड हो गया, दूसरा है एज बेस्ड। मतलब आपकी एज के बीच डिफरेंस की वजह से आपको उतना टाइम मिलता है अपने प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए। एज डिफरेंस ऑन एवरेज द अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट द टीचर्स रिसीव द डिक्रीज विद इन द एज ऑफ टीचर्स एवरेज अक्रॉस ऑल कंट्रीज। टीचर्स अंडर 30th year of age receive around 21 days for professional development. The number declined steadily to average around 14 days of teachers whose age of 50 years and more. मतलब एज में भी वेरिएशन होने की वजह से आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में कम वक्त मिलते हैं। जिनकी उम्र 30 साल तक है उनको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए 21 दिन का वक्त मिलता है, 21 days. But if you are 50-year-olds, you got 14 less days to improve your professional growth. This difference between the age group are all the statistically significant. This indicates that on the average, less experienced teachers receive more days to professional development than more experienced teachers. जो लोग टीचर जिनकी उम्र ज्यादा है, जो बहुत दिनों से टीचिंग का फील्ड में है, ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है,
तो उनके अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उनको कम वक्त दिया जाता है। जो नए हैं उनको ज्यादा समय दिया जाता है, क्योंकि वो भी नए हैं, उनसे उनकी तुलना में इनका एक्सपीरियंस कम है। As the country levels, the significant difference at the most pronounced in Italy, Poland, Portugal, where the teachers less than 30 years of age participate in the twice of many days, a development teachers age of 50 years over again. The country patterns vary. In some countries, lower secondary teachers remain the active in professional development throughout their career. ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें लोअर सेकेंडरी के जो टीचर होते हैं ना, पूरे अपने कैरियर में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए व्यस्त रहते हैं। In Bulgaria, for example, the teachers of in each age group take part in the all over 20 days professional development during the previous 18 months. In fact, among those aged 50 years and over, the number was 27 days. The same number was youngest age group. Next, qualification level difference. On average, across the participating countries, teachers with a master's degree or high qualification receive more days of professional development, some 20 days, than whose the bachelor degree less than 70 to 80 days. अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि क्वालिफिकेशन लेवल डिफरेंस देता है। अगर किसी व्यक्ति ने बैचलर डिग्री किया और किसी ने मास्टर डिग्री किया, तो प्रोफेशनल डिग्री करने वाले जो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो मास्टर डिग्री किए हैं, उनको बैचलर डिग्री के तुलना में ज्यादा वक्त दिया जाएगा। अगर मास्टर डिग्री को 20 दिन दिया जाता है अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को करने के लिए, तो वही बैचलर डिग्री वाले को 17 to 18 डेज उनको दिया जाएगा अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को करने के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन लेवल डिफरेंस भी है। दिस पैटर्न इज apparent in almost all the participating countries. अब ये आपको देखने को मिल जाते हैं। Exceptions be to Austria, Belgium. ऑस्ट्रिया और बेल्जियम को छोड़ के हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, where the teachers with a master degree or higher receive on average the least number of days. All teachers qualified a master's degrees. In a number of countries, a least qualified, that is, those with qualification below the level of bachelor's degrees receive the least professional development. This would be appear to be worrying to the finding, as those who arguably might be benefit most of from further professional development are getting the least. This may raise the questions of equity, particularly if such the teachers of disproportionately employ in the more challenging schools, as the previous research has shown by OECD 2005. This pattern is most pronounced in Mexico, where those with at least master degree receive almost twice a number of days of development as those with less than the bachelor's degree. Even so, the amount of professional development received by the latter group, 827 days, it is still higher than the amount teachers receive on the average
is the most other countries surveyed. This finding presents a notable parallel to the result the concerning with the participations of adults in non-formal continuing the education and training, which indicates that high educated adults in the general population is likely to participate in such the training by OECD in 2005. This can be consequence of issues concerning demand for training as well as its supply on an equitable basis. Difference between the public and private schools. As defined here, the private school comprise both independent and private and government dependent private schools. The later being privately run by the but receiving the most their funding public sources. On average, participating countries, teachers, public schools, and had no one is more professional development than the private schools. Counterparts at difference that is the statistically significant, except the Bulgaria, where the proportion of teachers in this private sector is very small. The largest difference in the favor of public sector, public school teachers, was in Korea, though there were also the sizable. The difference in favor of private schools teachers, none of these are statistically significant. Next is school location difference. On average, the amount of lower secondary teachers professional development it much same, regardless of whether the schools in which the teachers are located in the village, town or cities. Although countries vary in this respect, there is no prevailing trend, and different are generally statistically significant in no country. For the instance, does the amount of professional development consistently increase or decrease with the size of populations in the school's locality? For example, in Brazil, teachers in village schools, fewer than 3,000 population took part in significantly more professional development activities than their counterparts in the other type of countries. 23 days compared with the 21 for all teachers who took the professional development in Brazil, while the reverse was true in the Bulgaria, Mexico and Poland. On the basis of this mixed evidence, the geographic locality of a schools does not appear to alter the participation in the professional development. Type of professional development. Analysis of type of development activities engaged in can be informed and may be some way towards explaining difference in the teacher's average number of the days of a professional development participations. Tallies asked the teachers about the various activities ranging from more organized and structured to more informal and self-directed learning.
all of the listed. Therefore, the informal dialogues to be proved, teaching and reading professional literature, which we are excluded from the analysis to previous sections, are included here. So, thanks to all of you, and we are discussing about my topic is the needs and the way of professional growth. Thank you for all of you.